Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 5th January 2022. It's a positive day for markets. Nifty is up around 120 points and Bank Nifty is also up around 850 points. Actually it is up almost 1000 points but it closed at 850 points plus. So it's a big positive day for markets and tomorrow is Nifty Bank Nifty weekly expiry. So ये वीडियो में अपन कल के लिए एक्सपायरी स्टेटस के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड थोड़े स्टॉक्स एंड कमोडिटीज में चार्ट सेटअप देखेंगे एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. दिस इज X1 सिस्टम. दिस इज निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट. यू कैन सी इट क्लोज्ड एट 17,946 एंड इसमें अपने पास एक बाय सिग्नल चल रहा था. दिस सिग्नल यू ऑलरेडी नो बिकॉज इट इज कवर्ड इन द लास्ट वीडियो. यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो. सो इसमें आपके पास एक 17,050 के पास एक बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया था. दिस सिग्नल इज क्लियरली एक्सप्लेन्ड. यू कैन सी हियर earlier it was in downtrending zone, so in this also you got around 1000 points, and in this previous sell signal it has gone into downtrending zone. So you can see this Jones indicator has shown you red color ribbon. So if it shows you red color ribbon, it is downtrending zone. So downtrending zone में अपना जो rules है वो change हो जाता. So one signal will not be enough and there are multiple conditions to be satisfied. So due to those conditions it is not valid signal. ये भी इनवैलिड सिग्नल है. उसके बाद में यू कैन सी दिस इज वैलिड सिग्नल बिकॉज यू कैन सी वी गॉट बोथ दीज सिग्नल्स. दिस इज फर्स्ट कंडीशन and afterwards second condition is that filter candle box everything must become green. So everything got satisfied here. So this is valid signal got triggered here, and afterwards you can see one more sell signal has come, but it is not triggered. It is actually valid signal. If this particular low is broken, that would have become valid, but this particular signal, this candle low is not broken. So it is clearly explained. So gap down आए तो कैसे काम करना, गैप अप आए तो कैसे काम करना, ये सब क्लियरली एक्सप्लेन किया था. सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे दिस इज अ गैप डाउन. सो कभी भी गैप डाउन आए तो इसके नीचे अपन सेल ऑर्डर लगाते हैं और उसके बाद में फर्स्ट 4 कैंडल्स का लो के ऊपर, लो के नीचे अपन सेल ऑर्डर लगाते हैं. सो दिस सिग्नल डिड नॉट ट्रिगर एंड अल्टीमेटली यू कैन सी वन मोर री-एंट्री सिग्नल हैज कम हियर. सो व्हेनेवर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए ओरिजिनल एंट्री वाज समवेयर हियर, and if you are getting one more arrow below that price, no, or nearby that price, you can take re-entry into that. This is called continuation signal. Continuation में generally अपन काम नहीं करते if it is too far. For example, if you bought it 100 rupees and if continuation signal is coming at 110, we will not take buy signal. But if it is coming at 95, that is much more favorable signal. That is the reason this is 17,000 ये 79, 89 जो भी है इसके पास अपना buy trigger हो गया था second time. So 17,080 से you can see here now it is at 17,946. So 900 points profit in Nifty in last I think जो भी है ये 4-5 days एक बार देखेंगे. सिग्नल अपना देख लीजिए 24 दिसंबर को आया था. सो 1 2 3 4 5 6 7 days में you got around 900 points profit. एंड इसके पहले अर्लियर सिग्नल में भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आया था. यू कैन सी हियर दिस वाज द सेल सिग्नल. सो इसमें भी फ्रॉम हियर यू कैन सी 1 2 3 4 5. सो 5 days में दिस हैज गिवन मी 1000 पॉइंट्स एंड इन दिस निफ्टी चार्ट 7 days में वी गॉट अराउंड 900 पॉइंट्स. So earlier Nifty it used to move in 100 point 150 point range, but every day it is giving you around 200 to 250 points range. So Nifty का range बढ़ गया. So your stop losses also will become big and your targets will also become big. And main point ये जो chart में देख लीजिए after this signal got triggered, why it has gone up 900 points? That is an important question here. In previous video I have clearly explained that whenever bulls and bears are trapped in one particular area, you will get big trend out of that. So यहाँ पे देख लीजिए एक buy signal आया था and this signal you can see here many people got trapped here by shorting in this area, but अपने पास तो sell signal तो आ गया but it is not triggered. So whoever has bought in our system they have held the long position, but जो भी weak hands है वो सब यहाँ पे reverse करना पड़ा. और यहाँ पे देख लीजिए आफ्टर दैट पर्टिकुलर दिस वन नो ये डाउन ट्रेंड के बारे में नॉट डाउन ट्रेंड आफ्टर दिस सेल सिग्नल अगेन नो दे हैड टू बाय. सो इन दिस प्रोसेस many people would have lost around 300-400 points, but अपने पास तो एक ही सिग्नल था and this was the area where we have added one more lot. So in our X1 system you are not trapped in this consolidation. So this is the strength of X1 system. X1 system में कभी भी आप consolidation में trap नहीं होते.
So what is the difference between the X1 system and other systems is this one. So X1 system में कभी भी आप कंसल्टेशन में ट्रैप नहीं होते. दैट इज द रीजन दिस इज कॉस्टली. आपको मार्केट में बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर से 1000 रुपीज 2000 रुपीज में जो सॉफ्टवेयर है उसको इसको क्या डिफरेंस है बोलते हैं. उसमें जो भी आप पैसे कमाए ट्रेंडिंग जोन में दैट विल बी लॉस्ट इन कंसल्टेशन. बट अपना सॉफ्टवेयर में कंसल्टेशन में कभी भी आप ट्रैप नहीं होते. इससे भी बुरा कंसल्टेशंस हैव शोन इन द प्रीवियस वीक्स वीडियोस. यू कैन जस्ट चेक प्रीवियस वीडियोस. नहीं तो हमारा ट्रेनिंग वीडियो देख लीजिए, उसमें भी आपको बहुत सारे ये है. सो कभी भी 99% ऑफ टाइम यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन कंसल्टेशन. कभी भी आपको ट्रैप होगा तो एक बार रिवर्स कीजिए, वहां से जो भी आपका लॉस है 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी है वो सब आप कवर होता है. सो रिवर्स करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बॉट 1 लॉट ईयर, अगर अपना सेल सिग्नल यहाँ पे ट्रिगर हो रहा बोलते यहाँ पे 2 लॉट सेल ऑर्डर लगाइए. नहीं तो आफ्टरवर्ड्स नो ऑन दिस नो ये जो 4 कैंडल्स का लो के नीचे यू कैन पुट 2 लॉट्स सेल ऑर्डर. सो रिवर्स करने के डरने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट विल हैपन इज दिस प्रीवियस बाय सिग्नल विल बी क्लोज एंड यू विल गो इन रिवर्स डायरेक्शन. बट यहाँ पे तो उसका जरूरत नहीं पड़ा. सो इन दिस प्रोसेस इन दिस एरिया मेनी पीपल आर ट्रैप्ड. दैट इज द रीजन यू गॉट ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स रेंज इन दिस पर्टिकुलर बाय सिग्नल. And एक important point क्या बोलते हो, after this particular day you can see this is a filter. So on this particular day it has become green. So इसके पहले green था, बाद में एक छोटा disturbance आया था. This particular filter shows you buying pressure, selling pressure. अगर आपको ये blue है तो सॉरी green है तो this is buying pressure. अगर आपको red है तो selling pressure है. इससे आप sell नहीं करना, buy नहीं करना. Just it shows you buying and selling pressure. So after this particular day, after 30th December till now, this particular filter did not change the color. This filter is sensitive indicator. So छोटा भी आपको pullback मिले तो this will become red here, but you can say there is no change in color here. So sensitive indicator भी आपको color change नहीं हो रहा बोलते. You can see what kind of buying pressure is there in the market. So from here you can see from 17,050 now we are at 17,950, almost 900 points का profit है. इसके पहले we used to get only 300 400 या 500 points profit in Nifty, but nowadays I think this 900 points has become common here. Almost last month भी 900 points 1000 points आया था, ये भी आपको 900 points आया था. But there should be some limit to the greed. I don't think any market, any index will sustain this kind of up move. So थोड़ा नीचे आके ऐसा this kind of up and down movement आया तो that would have been a stable moment. But यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए. क्यों बोलते 900 पॉइंट्स इज वेरी गुड प्रॉफिट. सो प्रॉफिट बुक कीजिए कल मॉर्निंग आपको, और एक बार गैप मिले तो नीचे आया तो फिर बाय कर सकते हैं. मार्केट कहीं भी नहीं आता. सो इट विल नॉट रन अवे फ्रॉम हियर टू 19,000. सो इट हैज टू कम डाउन. सो इट विल कम डाउन. सो वेट कीजिए. अभी तो एज ऑफ नो देयर इज नथिंग इन दिस वन, नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर चार्ट. हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग. 3 boxes भी ग्रीन है और फिल्टर इज कंटिन्यूसली ग्रीन हियर. सो इफ यू सी वन पर्टिकुलर रिबन, सॉरी दिस वन रेड कलर का लाइन आए तो यू कैन बुक पार्ट प्रॉफिट. एटलीस्ट आपके पास 2-3 लॉट है तो एक लॉट एग्जिट कीजिए, उसके बाद में देखेंगे फिर पुल बैक में यू कैन टेक री एंट्री. एंड वन मोर पॉइंट इज, इसके पहले का वीडियो में आप क्लियरली एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर एक बार या जीरो के ऊपर जाने के बाद में दिस इज कॉल्ड जीरो क्रॉसओवर. सो जीरो क्रॉसओवर होने के बाद में एक सेल सिग्नल आता है. दैट सिग्नल विल बी वेरी गुड सिग्नल. बट यहाँ पे देख लीजिए इन दिस एरिया इफ यू आर नॉट गेटिंग बाय सिग्नल, सॉरी सेल सिग्नल, so this one will give you big trend. So this is important point, याद रख लीजिए हर चार्ट में this will be applicable. So whenever there is a crossover, there is a possibility of a sell signal. That will be a very good sell signal. अगर आपको sell नहीं आ रहा बोल तो it is going to give you big trend. So when I made video, I think on this particular day I told very clearly that big trend will come because it has not given any sell signal. I don't know that from here we will get 600 points move. But this is how market behaves. So whenever you see this kind of structure and if you are not getting any sell signal after zero crossover, that will be very good opportunity to take one more long position. In the same way, नीचे zero crossover होने के बाद में if you are not getting buy signal, that will give you big uptrend. So that is important point about this particular oscillator. So this oscillator is extremely important. That is the reason this is a part of advanced version. So this oscillator will give you prediction power. And नीचे देख लीजिए आपको TDF Jones indicator, it has shown you, it has given you green color dots here. If you get more than 21 dots, that will be considered as second grade uptrending zone. So full green color बना तो it is called first grade uptrending zone. But यहाँ पे देख लीजिए आपको only dots are there. So this is equivalent to uptrending zone, but उसमें थोड़ा less force रहता when compared to first grade uptrending zone. So Nifty का chart में uptrending zone is going on.
एंड इसके पहले का हमारा वीडियोस देखे तो व्हाट कैन हैपन इन अपट्रेंडिंग जोन, यू नो. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज इन अपट्रेंडिंग जोन. सो फर्स्ट इज दिस पर्टिकुलर मूवमेंट, नो, दिस विल कम. This is called sine wave structure. So this is first probability. Sine wave structure is first probability, and second probability is this kind of movement will come. This is called wave structure 1, 2, 3, 4, 5. जो wave structure है, that kind of possibility is there, but we cannot say which one will come. But you must be ready for both these structures, and this particular sine wave structure is extremely difficult for many traders. Whatever money you made here, you'll be losing in this particular consolidation. बट ये जो साइन वेव स्ट्रक्चर में अगर आपके पास x1 है तो यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन दिस वन. सो एडवांस क्वेश्चन लेने के लिए ट्राई कीजिए, नहीं तो आपके पास बेसिक है तो अपग्रेड करने के लिए ट्राई कीजिए, अदरवाइज यू विल बी ट्रैप्ड इन कंसोलिडेशन. एंड इसमें ऑल पुल बैक्स कैन बी बॉट. सो इन अपट्रेंडिंग जोन एवरी पुल बैक मस्ट बी बॉट. सो इफ यू गेट पुल बैक अप टू दिस पर्टिकुलर डॉट, यू कैन टेक वन मोर लॉन्ग पोजीशन. सो कल वी आर एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक बिकॉज हमारा जो एक्सपायरी दैट इज कमिंग टू 17,800. मैं आपको ऑप्शन टेबल पे एक्सप्लेन करता हूँ, बट एज ऑफ नो दिस इज अ चार्ट स्ट्रक्चर, नथिंग टू वरी इन निफ्टी. बट इफ यू गेट वन मोर गैप अप, एक बार एग्जिट कीजिए, उसके बाद में देखेंगे, नहीं तो वेट फॉर रेड कलर लाइन फिल्टर एंड पार्ट एग्जिट कीजिए. अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे. बैंक निफ्टी में देख लीजिए, आपको I'll put period separator. If you want this by default, you can put this one. And इसमें भी देख लीजिए अपने पास बड़ा कंसल्टेशन था, बिगर देन निफ्टी. इसके पहले ये सेल सिग्नल था निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट पे. इट हैज गिवन यू ऑलमोस्ट 3000 पॉइंट्स प्रॉफिट, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू कैच बॉटम. एंड इन दिस प्रोसेस यू कैन सी इट हैज गॉन टू डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन विल बी in force till this zero line is crossed. So in this process you can say this is important chart. अगर आपके पास दूसरा किसी भी सॉफ्टवेयर हो तो एक बार कंपेयर कीजिए. इन दिस एरिया ये जो कंसल्टेशन है, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, दिस इज इनवैलिड सिग्नल, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है, ये भी इनवैलिड है. ओनली दिस इज वैलिड सिग्नल. व्हाई दीज आर नॉट वैलिड सिग्नल? सो जस्ट हैव टू सी आवर प्रीवियस वीडियोस. एक बार हमारे चैनल में जाइए. चैनल में गए तो आपको यू कैन सी दिस इज अवर चैनल लाइव ट्रेड. इसमें यू कैन गो टू प्लेलिस्ट सेक्शन. प्लेलिस्ट में यू कैन सी कंटिन्यूसली ऑल वीडियोस का प्लेलिस्ट रहता है. यहाँ पे देख लीजिए X1 सिस्टम का ट्रेनिंग वीडियोस है. सो इसमें वी हैव एक्सप्लेन्ड क्लियरली अबाउट द रूल्स इन ट्रेंडिंग जोन. इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु वीडियो से एक बार देख लीजिए. सीक्वेंस में देखो समझ में आता, नहीं तो समझ में नहीं आता. सो सीक्वेंस में देख लीजिए, आपको टाइम नहीं है तो समझ में नहीं आता, मार्केट में आपका पैसा चले जाता. सो यू हैव टू स्पेंड सम टाइम ऑन ए सिस्टम, अदरवाइज यू विल लूज मनी. एंड दिस इज X2 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस. X2 is for option trading and I will show you the charts of X2 system. You can say this is X2 system chart. So इसमें देख लीजिए, आपको from last 3-4 days there are no signals, continuously buy signal चल रहा था. So this is specially made for bank nifty and nifty options. अगर आपको momentum catch करना बोल तो this is system. So X2 system is for momentum catching and X1 is to catch a trend. So if you are a futures trader, go for X1, and if you are option trader, you can test X2 system. This is provided on a monthly basis. There are some more playlists like 232 strategy and TDF zone से कैसे इन्वेस्टमेंट करना बोल के भी सेपरेट एक प्लेलिस्ट है. एंड गैप्स है तो कैसे काम करना बोल के भी सेपरेट प्लेलिस्ट है. एक बार देख लीजिए. आवर गैप्स आर डिफरेंट देन टेक्स्ट बुक गैप्स. सो एवरी डे यू आर गेटिंग गैप अप एंड गैप डाउन. सो इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल. हमारा जो गैप्स है उसका एक बार देख लीजिए. एंड इन दिस पर्टिकुलर चार्ट यू कैन सी अपना बाय सिग्नल ट्रिगर हो गया था somewhere around 35,790. From 35,790 now it is at 37,777. So 2,000 points का profit in bank nifty chart. And this is invalid exit signal. So ये signal कभी भी exit signal कभी भी इसके नीचे आना चाहिए, F10 के नीचे, then only that is valid signal. So because of this disturbance on this particular day, you can see there was a big gap up. ये जो candle है actually ये कब आया था मुझे आइडिया नहीं है, क्यों बोल तो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैंडल फॉर्म हो गया था. ओनली मे बी ए स्मॉल क्वांटिटी वुड हैव गॉट ट्रेडेड देयर. सो टर्मिनल पे भी आपको वो ये रेट था. एंड यू कैन सी हियर दिस इज वेयर आवर बाय सिग्नल गॉट ट्रिगर्ड. सो यहाँ से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है. इसमें भी यू कैन सी आफ्टर जीरो क्रॉस ओवर there is no sell signal. So this is one more sign that bank nifty will go up from this particular area. So यहाँ पे देख लीजिए, from here also it gave almost 1000 points profit. And बीच में you can see here there was some disturbance here, small disturbance, but that is not a problem because you can see here it is continuously showing you green color dots here. More than 21 dots have come. So this is also in uptrending zone. सो निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ आर इन अपट्रेंडिंग जोन. एंड इसमें भी आपको सेम स्ट्रक्चर आने का चांस है. सो वेन एवर यू सी अपट्रेंडिंग जोन, डाउन ट्रेंडिंग जोन, ये रिबन आए तो वेन एवर यू सी दिस पर्टिकुलर रिबन, ये आपको माइंड में आना चाहिए साइन वेव स्ट्रक्चर और वेव स्ट्रक्चर. साइन वेव स्ट्रक्चर कैसे रहता है आपको? ऐसा रहता है आपको.
wave structure कैसे रहता like steps 1 2 3 4 5. So this kind of probability is there, but there will be one small pullback we are expecting tomorrow because हमारा जो एक्सपायरी दैट इज कमिंग टू 37,400 मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ ऑप्शन टेबल में, बट इसमें एज ऑफ नो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे देख लीजिए 3 बॉक्सेस ग्रीन है, हायर टाइम फ्रेम में सपोर्टिंग पुल बैक है तो और एक बार इसमें बाय कर सकते हैं, और पुल बैक इन आफ्टरनून जोन विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। एंड इसमें देखेंगे अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन टेबल में, विल सी हाउ टू ट्रेड टुमारो। यू कैन सी दिस इज अ निफ्टी ऑप्शन टेबल एंड दिस इज बुलिश ऑप्शन टेबल। एंड हमारा जो एक्सपायरी दैट इज कमिंग टू 17,800, सो अभी एज ऑफ नाउ इट इज एट 17,900 और 950 के ऊपर ये स्पॉट। सो एक बार देखेंगे स्पॉट कहाँ पे क्लोज हो गया था, 70,925। सो 125 पॉइंट्स का नीचे मेरा एक्सपायरी आ रहा है, मेरा कैलकुलेशन। सो आवर कैलकुलेशन इट हैज गॉट ऑलमोस्ट मोर देन 80% एक्यूरेसी। एवरी वीक वी आर प्रोवाइडिंग इन ट्विटर अकाउंट, हमारा इसमें देख सकते हैं आप, यू कैन गो टू अवर दिस वन नो लाइव ट्रेड्स अवर दिस वन ट्विटर अकाउंट, एंड इसमें यू कैन सी probable expiry level we are providing at 130 and 230. इसमें almost more than 80% accuracy है। So if you have any knowledge about option trading, this is extremely important tool. Based on this you can do lot of things। आप scalping कर सकते हैं, नहीं तो कुछ straddle बेच सकते हैं, नहीं तो कुछ stagnant बेच सकते हैं, नहीं तो iron condor बना सकते हैं। You can do lot of things based on this probable expiry level। So this is a proprietary calculation। एक बार इसको observe कीजिए, इसके हिसाब से आप काम करने की ट्राई कीजिए, then you will understand the importance of this particular level। एंड इसमें निफ्टी का चार्ट में इफ यू गेट ए गैप अप यू कैन बाय 17,900 पुट ऑप्शन टुमारो। नाउ इट इज एट 46 rupees। इफ यू आर एबल टू गेट इट एट 10 rupees दैट विल बी वेरी गुड प्राइस टू पे फॉर दैट। एंड गैप डाउन आए तो एक बार वेट कीजिए, उसके बाद में बेस्ड ऑन आवर दिस वन नो चार्ट स्ट्रक्चर उसके हिसाब से काम कर सकते हैं, बट ऑल गैप डाउन्स विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। बट इमीडिएटली बाय मत कीजिए, वेट फॉर द डॉट लेवल, ये डॉट तक आए तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं। दिस इज एट 17,700। सो थोड़ा प्राइस नीचे आए तो ये भी थोड़ा ऊपर आता, प्रॉब्ली 17,750 800 के पास आपको सपोर्ट मिलता है। अगेन फ्रॉम देयर यू गेट ए बाउंस बैक। सो वेट कीजिए फॉर ए पुल बैक इन दिस वन। एंड कल मॉर्निंग आपको गैप अप मिल गए तो 17,900 का पुट ऑप्शन बाई करने की ट्राई कीजिए। एंड लेट अस सी बैंक निफ्टी ऑप्शन टेबल नो, दिस इज आल्सो बुलिश ऑप्शन टेबल। एंड इसमें देख लीजिए आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 38,000 एंड सेकंड रेजिस्टेंस इज एट 38,500 और यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट सपोर्ट इज एट 37,500। थोड़ा वीक है ये सपोर्ट। सो कल मॉर्निंग मेरा जो एक्सपायरी है एज पर दिस ऑप्शन टेबल इट इज कमिंग टू 37,400। सो दिस विल चेंज टुमारो, क्यों बोल तो कल ये ओपन इंटरेस्ट चेंज होता है एंड आई भी चेंज होता है, ये सब चेंज होता है। सो बेस्ड ऑन दैट again we have to do some calculation, but based on present option table it is coming to 37,400। so कल मॉर्निंग आपको गैप अप मिल गए तो एक बार पुट ऑप्शन लेकर ट्राई कीजिए 37,600 या 700। नाउ इट इज एट 150। 37,600 का पुट ऑप्शन इफ यू आर गेटिंग एट 23-25 rupees that will be very good bet for tomorrow। so 600 का पुट ऑप्शन 25 rupees पे आप बिड लगाकर छोड़ दीजिए, नहीं तो आप 130 का लेवल तक वेट कीजिए, उसके बाद में वॉट एवर लेवल दैट कम्स इन ऑर्डर अकाउंट बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड। एंड अभी अपन स्टॉक चार्ट देखेंगे थोड़े फास्ट वर्ड में, क्यों बोल तो वीडियो विल बिकम लेंथी एंड फ्राइडे का वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन यू। Let us see charts in fast mode। This one is Bank Nifty chart। This is 30 minutes Nifty X2 system chart। इसमें बाइस में चल रहा, this is X2 system, this is Bitcoin chart। So this system is for all world markets। You can see here, you can see the data of all global markets here, international markets का folder में यहाँ पे देख सकते हैं। All global indices will come, Dow Jones, Nasdaq, all these things will come, Hang Seng, CAC, DAX, everything will be coming here in this one। And you can see गोल्ड सिल्वर कॉपर ये सब कॉमेक्स का इंस्ट्रूमेंट्स है, इसमें भी आपको लाइव डेटा मिलता। एंड फॉरेक्स का ऑल पेड्स विल कम। एंड यू कैन सी एनएससी का कैश फोल्डर पे यू कैन सी ऑलमोस्ट 400 इंस्ट्रूमेंट्स हियर। एंड एनएससी का फ्यूचर्स फोल्डर में यू कैन सी ऑलमोस्ट 300 जो भी है, जितने भी आपको फ्यूचर्स में है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिस्टम ही सेम फॉर एवरीथिंग, ट्रेडिंग सिस्टम ही सेम। आपको निफ्टी को एक सिस्टम, बैंक निफ्टी का एक सिस्टम, बिटकॉइन को एक सिस्टम नहीं रहता। सॉफ्टवेयर को ये सब मालूम नहीं होता कि दिस इज बिटकॉइन चार्ट, नहीं तो ये निफ्टी का चार्ट है, नहीं तो बैंक निफ्टी का चार्ट है बोल के मालूम नहीं होता। दिस विल शो यू सिग्नल्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। एंड इसमें देख लीजिए आपको बिटकॉइन चार्ट में सेल सिग्नल चल रहा है एंड यू कैन सी हियर आफ्टर जीरो क्रॉसओवर देयर इज नो बाय सिग्नल। So it is going for this one down move। So if you are having any position Bitcoin, you can carry forward your short position। आपका लॉन्ग है तो एक बार एग्जिट हो जाइए। एंड नेक्स्ट देखेंगे कोल इंडिया, ICICI बैंक बाई में है। निफ्टी 4 आवर्स का चार्ट है, दिस इज एक्सो सिस्टम चार्ट। अगर आप पोजिशन ट्रेडिंग करना चाहते हो यू कैन यूज दिस वन। एंड नेक्स्ट इज दिस वन निफ्टी बिटकॉइन चार्ट, दिस इज एक्सो सिस्टम चार्ट।
सो X2 से भी आप काम कर सकते हैं हायर टाइम फ्रेम्स में, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज एंड दिस वन नो क्रिप्टोस आप काम कर सकते हैं X2 से, नहीं तो X1 से भी आप काम कर सकते हैं, बट X2 में देख लीजिए आपका मोमेंटम कैचिंग सिस्टम है ये। सो दिस इज स्पेशली मेड फॉर बैंक निफ्टी ऑप्शंस। यहाँ पे देख लीजिए दिस इज बजाज फिनसर्व चार्ट, इट हैज गिवन यू ऑलमोस्ट कितना ये 16,600 से ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। This I'll explain you in this one Friday का वीडियो। एंड दिस इज ONGC चार्ट, टाटा मोटर्स, L&T, HDFC बाई में है, इंडसइंड बैंक बाई, बजाज फाइनेंस बाई में है, अप ट्रेंडिंग जोन में है, यू कैन सी ग्रासिम बाई में है, DLF बाई में है, UPL बाई, HDFC बैंक बाई, यूरो USD बाई में है 4 आवर्स चार्ट। दिस इज वेदांता चार्ट, इट इज इन सेल सिग्नल, नो सेल सिग्नल ट्रिगर, ये सेल सिग्नल में है। हिंडाल्को अप ट्रेंडिंग जोन में, यू कैन सी हियर रिबन इज गोइंग ऑन, बाय सिग्नल में है। गोल्ड चार्ट, दिस इज इंटरनेशनल गोल्ड चार्ट, कॉमेक्स का गोल्ड चार्ट है, यू कैन सी वी हैव गॉट बाय सिग्नल हियर। एंड सिप्ला, यू कैन सी इट इज इन सेल सिग्नल, इन्फोसिस सेल सिग्नल। So everything is going up, only some stocks are coming down, and you can see here we got a sell signal Infosys chart. So IT sector में profit booking है, Tech Mahindra sell, India Bull Housing Finance Group in sell, ITC कहीं भी नहीं जा रहा, Coforge sell signal, RBL Bank. This is a very good example of downtrending zone. यहाँ पे देख लीजिए, after this downtrending zone, you can see we got no big downfall here from 190. Now it is at 130. Bank Nifty has gone up 2,000 points, but RBL Bank has gone down 70 rupees. Not 70, 60 rupees. बैंक निफ्टी ऊपर गए तो हर स्टॉक ऊपर नहीं जाता, नहीं तो निफ्टी ऊपर गए तो हर स्टॉक ऊपर नहीं जाता। सो डोंट ट्रेड लाइक दैट, फॉलो सिग्नल्स, फॉलो सिस्टम। दिस इज इनवैलिड सिग्नल, ये भी इनवैलिड है। सो इफ यू फॉलो सिस्टम यू विल मेक मनी, अदरवाइज यू लूज मनी। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो अपन इसमें बाय करते हैं। दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाय करने के लिए वी हैव गॉट सेपरेट रूल्स, सो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। दिस इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट इज TCS बाय में है, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिवर बाय सिग्नल चल रहा, एंड कोटक बैंक बाय सिग्नल, एंड इट इज आल्सो इन अप ट्रेंडिंग जोन। SBI बाय में है एंड अप ट्रेंडिंग जोन में है। ICICI बैंक, बैंक निफ्टी 5 मिनट्स का चार्ट है, निफ्टी 5 मिनट चार्ट। अगेन वी हैव कम टू दिस वन, मारुति बाय सिग्नल इज गोइंग ऑन, अप ट्रेंडिंग जोन में है, एंड दिस इज 4 आवर टाइम फ्रेम दिस वन। एंड क्रूड ऑयल चार्ट, सिल्वर चार्ट, Nasdaq सेल सिग्नल। डो जोन्स चार्ट देख लीजिए, आपको ये भी अप ट्रेंडिंग जोन में है, इट इज इन बाय, एंड as long as this level is not broken, this will not change, no, इसका ट्रेंड चेंज नहीं होता। so if this level is broken, हमारा मार्केट भी नीचे आता। so ये जो चार्ट है, you can use it for reference purpose in your daily trading। and next is this is option chart, HDFC बाय में है, हीरो मोटर्स बाय में है, टाइटन बाय में, अप ट्रेंडिंग जोन में है, रिलायंस बाय में है, इंडिगो सेल, डॉक्टर रेड्डी सेल, दिस इज सेपरेट चार्ट, BPCL बाय, M&M, Z लिमिटेड, Axis Bank, it is in buy signal. So this is these two signals are not valid signal. So everything is rule based here. exit signal को भी रूल है, एंट्री का भी रूल है, और सभी को रूल्स रहता है यहाँ पे। एवरीथिंग इज रूल बेस्ड, सो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सो ब्लाइंड ट्रेडिंग मत कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए। एंड यू कैन सी हियर देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल इंस्ट्रूमेंट्स हियर, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी सिग्नल। सो सिस्टम तो सेम है सभी के लिए, वेदर इट इज banking stock or infra stock or whatever it is, no, textile stock or whatever it is, no, every sector or every stock, every market, every index, no, same system, same rule। so rules को follow करना चाहिए। and इसमें देख लीजिए, हमारा हर वीडियो में यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वेलकम। कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता मेरे पास, और उतना टाइम भी मेरे पास नहीं है। एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। If you want to become master in bank nifty options and nifty options, we have got 2 courses. One is intraday course and second one is positional course. So इसमें if you want to become master, you can join these courses. Positional में if you have got 10 lakhs, we will show you how to make 1 lakh per month from that particular capital. And intraday के लिए तो you don't require 10 lakhs capital, 1 lakh है तो आपको बस हो जाता। but हमारा जो training program is a bit costly, but उसमें value है, that is the reason that is costly। and if you want to become master, you can join these courses। And we will end up this video here, and let us meet in next video. Thanks for watching.